नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। Chant Guru Stotram, first 5 verses. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हाँ जी, कोई प्रश्न? स्वामी जी, संसार रूपी अद्वैत के मकान में रहकर शरीर रूपी मन के भीतर से वैर भाव क्यों नहीं जाता? okay. इस संसार में रहते हुए हमारा द्वैत भाव क्यों नहीं जाता है, प्रश्न है। क्योंकि शंकराचार्य जी का भाष्य है, जितनी भी किताबें पढ़ते हैं उपनिषद में भी जो अद्वैत वेदांत है, बट स्टिल यू नो वी इतना अद्वैत के बारे में पढ़ के सुन के फिर भी ये द्वैत भाव हम में से क्यों नहीं जाता है, ये प्रश्न है। तो यदि हम सुन के पढ़ के यदि जीवन परिवर्तित हो जाता तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता था। जैसे यदि मुझसे कहा जाए कि जब मैं दुखी हूँ तब यदि मुझसे कहा जाए कि तुम दुखी नहीं हो तो मेरा दुख चला जाना चाहिए। यदि मैं बीमार हूँ तो मुझे कहा जाए कि नहीं तुम बीमार नहीं हो, और उससे यदि मेरी बीमारी दूर हो जाती है, मैं फिर स्वस्थ हो सकता हूँ। पर ये होता नहीं है। तो केवल अद्वैत के ही संबंध में नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में भी ये होता है। कारण यह है कि हमारी जो इतने लंबी आदत पड़ी हुई है अपने आप को शरीर मानना, जब जैसे ही मैं अपने आप को शरीर मानने लगता हूँ तो अन्य शरीरों को मुझसे भिन्न है ऐसा मानने लगता हूँ, और इस शरीर का जो अनुभव का क्षेत्र है, इस जगत को मैं अपने से भिन्न मानने लगता हूँ।
और ये जीव और जगत भिन्न भिन्न है, और उन दोनों का रचयिता कर्ता भी ईश्वर, वो भी भिन्न है। तो ये जीव जगत और ईश्वर के भिन्नत्व की मुझे इतने जन्म जन्मांतर से आदत पड़ चुकी है। मैं इस प्रकार से ही जीता आ रहा हूं इतने वर्षों से, इतने जन्मों से। तो इसको जो वेदांत की भाषा में कहते हैं विपरीत भावना। भावना यानी अनुभूति। विपरीत हमारी अनुभूति इतने समय से दृढ़ हो गई है कि उसको निकालना केवल सुनने मात्र से नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि वो असंभव नहीं है, वो संभव है, पर वो सुनने मात्र से नहीं हो पाता। दृष्टांत के तौर पर, ये दृष्टांत भी शास्त्रों का ही है। जैसे कोई गले में माला पहन के उस माला को ढूंढ रहा हो कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढ रहा है, और वो चाहता है कि वो कहीं दिखे मुझे बाहर। वो बाहर दिखना संभव ही नहीं है। तो उसमें आवश्यकता क्या है? कोई हमको बता दे कि भैया तुमने जो माला तुम ढूंढ रहे हो वो तुमने पहन रखी है, वो तुम्हारे गले में पड़ी हुई है। स्वकंठाभरणम यथा, ऐसे दृष्टांत दिया जाता है, शंकराचार्य जी ने ही दिया है। तो ये जो गले में ही माला मेरी है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, ये मुझे जैसे ही बताया जाए तो मेरे माला मुझसे दूर तो है ही नहीं, तो ज्ञान तो हो गया। फिर भी हो सकता है कि मैं फिर भी चाहूं कि मुझे बाहर से कुछ मिले, क्योंकि आदत पड़ी है, इतने वर्षों से मैं ढूंढ रहा हूं कि बाहर से कुछ दिख जाए, कुछ मिल जाए, मैं उसको उठा पाऊं और फिर पहन पाऊं। पर ऑलरेडी पहनी हुई कैसे पहनूंगा? ऑलरेडी मिली हुई है, उसको कैसे और जगह से ढूंढ सकता हूं? तो संभव नहीं। तो ये आदत की वजह से ऑलरेडी जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने का प्रयास हमारा चलता रहता है, इसीलिए द्वैत की भावना दृढ़ है हमें। पर जब इसका अनुसंधान कर, इसीलिए श्रवण, श्रवण के साथ मनन, मनन के साथ निधिध्यासन, ये जो हमको क्रम बताया है, साधना का क्रम बताया गया है, वो इसी के लिए। और ये निधिध्यासन जो है, ध्यान का अभ्यास है, वो इस विपरीत भावना से मुक्त होने के लिए ही है। तो अद्वैत का भाव तभी जाएगा जब द्वैत का, तभी जागेगा जब द्वैत का भाव नष्ट होगा, और वो पुरानी आदत तभी छूटेगी जब नई आदत डलेगी। और इसीलिए ध्यान अभ्यास का महत्व हमको बताया जाता है। तो इसी प्रसंग है तो बता रहा हूं कि कल से हम मेडिटेशन कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, 10 दिन का, ओनली ऑफलाइन। तो सुबह में 7 से 8 बजे यहाँ गुरुधाम में। तो एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन, यू कैन, यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर। अच्छा, अब एक और प्रश्न है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर डेथ? When we take up, wear a pair of clothes or a set of clothes, and full day we do all our work with those clothes, and then at the end of the day we change. So we have given up the set of clothes which we have worn for the whole day, and now we are ready to come into our pajamas for a good night's sleep. Then next day morning, again after a shower, again we get on to another set of clothes according to whatever is the occasion, whatever is my area of work, and based on that. So some people, now if they are working in an office, a formal environment, they will wear formals. If they have to go on some site to work or a factory, so then they'll have a slightly different kind of attire. If they want to go for a for an outing, for an adventure trip, they'll have some different type of clothes. So we take up different clothes and we give up after the purpose is achieved. So what after death, what we call as death, is the end of the body. The death of the body is what we call as death. As far as I, the Atman, is concerned, I don't undergo any change, including death. So therefore, I continue my journey till such time that I feel identified with the body, the mind, the intellect, etc. So I keep changing my clothes. I keep going to different areas where I fulfill my objective, my work, and then give up that pair of clothes also, get to another. So this is what, so after that there are various gatis, but to put it very in simple language, it is that we
go on for our next set of journey based on our past karmas, whatever we have performed, whatever we have accrued over a period. Based on that, we keep changing our clothes, changing our roles, fulfill certain things, then move on. So that is what, so after death, the journey continues. There's nothing stopping us until we realize that I am not the body. Till such time, we feel that we are undergoing death and we are taking another birth. But the journey is actually old clothes removed, new clothes worn, go on for some time, again that removed, new clothes. So that's what is the journey. Okay. Any other क्वेश्चन और कोई? अब यहाँ तो कुछ आया नहीं है अभी तक. Swamiji, we have many Upanishads. It is said that all the Upanishads say the same thing. But then why do we read so many? Why not we read just one and memorize and live only one? Because we get in the habit of reading one after the other instead of living one of the Upanishads. Puja Gurudev used to explain that actually one is enough. It's like we get nutrition from food, like, and food is balanced diet. We say that we should have a little bit carbohydrate, little bit proteins, little vitamins. So in a balanced formula, we should have that balanced diet every day. And actually, the once I have said that so much of this 5 things, if I eat every day, that's enough. So I eat that, and I can survive. But still, my menu changes every day. There are different dishes, and the same vegetable I can make in different ways. Same combinations I make here and there, change some things here and there. So the same preparation can be made in different ways in the different parts of our country itself. So much of varied preparation. So it is not about just the nutrition. It is something may click to me, something may not. It is like what we now general very basic food item which in our country, almost all parts of our country we eat is rice. Now the meaning of rice is different in different parts of the country. Consumption of rice happens in various ways. It is not the same everywhere. कोई उसका पापड़ बना के खाता है, कोई उसको दाल के साथ मिला के खाता है, कोई दही के साथ मिला के खाता है. Some people may make some other preparation. So there are various ways of doing the same thing and we enjoy it. So basically the idea is twofold. One Upanishad, not only one full Upanishad, one mantra or one word of the Upanishad also is enough. If we can, for the sake of realization, one word is enough and can liberate us. It has that potency. But if we think about our, when some things click, but some things don't. Some things don't click at all. I have read one Upanishad, nothing has happened. Okay, then maybe that language, that presentation did not appeal to me. It did not ring a bell inside. But maybe another presentation, another way of giving the same knowledge may appeal to me. So it is just to make sure that, in all different ways, we are trying to achieve the same thing. So it is not necessary. As such, one Tattvamasi Mahavakya, over, enough. But to understand Tattvamasi, you have to read the entire Upanishad. In the Upanishad also, Tattvamasi is repeated 9 times in that Upanishad. The same Upadesha is repeated 9 times. And 9 times, each time with different examples to explain it. Raising different questions and explaining it with different examples. Very practical. So for us, it is not the need from the Upanishad side. Because we see that, in the Upanishads also, there are some ideas which are repeated in the same Upanishad also. There, Shankaracharya very beautifully says that the mantras are not lazy. They don't feel tired or exhausted to repeat. They say, till the time you get the realization, I will repeat. So that is Shruti Mata. That is the Upanishads' compassion, the Rishis' compassion. And they have presented in so many different ways. So many stories are there, so many examples are there, examples picked up from the nature, example
that we see in our day-to-day life, and based on that to understand the same truth. So variety, it's good only. Like we have one shop is enough to get whatever we need. One mall is enough. But then why do we have so many malls? Some malls are closer to my house. Some malls are the ambiance is different. Some malls there is some special attraction. Some malls there are special schemes, discounts. So all the different things appeal to different people. So Gurudev used to say, as our texture of our minds are different. Therefore, different ways of presentation help us. So that's the reason we have these. Okay. As child, we were innocent and selfless. With age, why do we acquire many durguns? दुर्गुण क्यों आ जाते हैं बड़े होते हैं? तो बच्चे थे तो अच्छे थे, सेल्फलेस थे. The point is not that we are acquiring durgunas. The point is our sense of individuality crystallizes more and more. I am वाला जो है वो थोड़ा बच्चा जो छोटा होता है उसमें वो इतना crystallized नहीं होता है. It is, that existence is not very individualized. It's a more of a fluid type of thing. Here क्या हो जाता है, वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये मेरा है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, this is the good thing, this is a nice thing. ये एक again and again it's reinforced also through the environment. So if at all we have to blame somebody, we can blame the environment, but there is no blaming required because it is our own way of, in a way, हमारा जो growth होता है उसका pattern इसी प्रकार से हो रहा है. When I was in Chinmaya Yuva Kendra, I had asked once to one Swamiji about it. If we, a newborn child, we take care that he or she is not exposed to any of the evils of the world and give that child only satsang and positivity and all of our scriptural thoughts and everything, will that child not get self-realization or liberation quickly? I asked this question. So very nicely I was explained that it is not just what we are exposing the child or the jiva to in this janma. There is a baggage that the child is carrying from the previous janmas also. तो वो अपना बैगेज तो लेके आया है. यहाँ पर चाहे सब कुछ आपने पॉजिटिव दिया हो पर उसका भी तो एक्सप्रेस होगा. तो एक तो ये एनवायरनमेंट से जो ईगो क्रिस्टलाइज होता है, दैट इज वन रीजन, एंड द अदर रीजन इज आल्सो दैट आई एम कैरिंग माय बैगेज ऑफ वासनास. I have my own karmas which I am carrying. So with that, whatever I have to go through, so sometimes that sense of individuality makes me feel that ये पराया है, ये अपना है. और जैसे ही पराया आ गया तो then there is a sense of comparison, there is a sense of competition, there is a sense of mine and not mine, and then I love or hate, attachment or aversion, all these things keep coming. वो दुर्गुण उस रूप में ही आते हैं. तो basically my baggage that I have carried from the past lives is a very, very major contributor to such, such growth in our life, and also environmental influence. So ये दोनों हैं, होते हैं. जो ये accumulated जो baggage है, ये हमारे पास जन्मों के कर्म, क्या यही भाग्य है? भाग्य का मतलब, हाँ, आपकी बात जो पिछले जन्मों का जो भी एक्यूमुलेटेड कर्म है, क्या यही भाग्य है, ये प्रश्न है. भाग्य कहो, नसीब कहो, प्रारब्ध कहो, ये सब सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं. डेस्टिनी कहते हैं इसको. वो डेस्टिनी, भाग्य, नसीब, ये सब जो भी हम कहते हैं, नियति, ये सब शब्द हैं. इसका अर्थ ये नहीं कि हम अभी बस जो होने वाला है वो जो होना होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं. मेरे पास चॉइस था तब मैंने कुछ चुना था. अभी आज उसका फल है जो चॉइसलेस, अभी मुझे उसका स्वीकार करना पड़ेगा. पर वो स्वीकार करते हुए भी मेरे पास चॉइस है
कि मैं उसको कैसा सामना करूं और इस समय में मैं कैसे किस प्रकार के कर्म चुनूं। तो चॉइस अभी भी है मेरे पास, तो भाग्य है, पर साथ साथ में मेरे पास स्वतंत्रता भी है कर्म करने की। तो वो पुराने कर्म क्या कर सकते हैं? पुराने कर्म को कटना मतलब +1 -1 = 0 का हिसाब नहीं है। +1 का प्लस रिजल्ट, -1 का माइनस रिजल्ट, दोनों को भोगना पड़ेगा। कटने का कोई हिसाब यहाँ पर नहीं है, अकाउंट जैसा नहीं चलेगा, इतना खर्चा हुआ, इतना आमदनी हुई, दोनों को साथ में मिला के इतना बैलेंस निकला, ऐसा हिसाब नहीं लगेगा इसमें। इसमें सीधा यही लगता है कि आपने एक अच्छा कर्म किया, एक बुरा कर्म किया, तो अच्छे कर्म का भी फल मिलेगा, बुरे कर्म का भी फल मिलेगा। वो अच्छा बुरा कर्म का फल भोगते भोगते आज जो भी कर्म आप चुन रहे हो उसका भी फल मिलेगा। तो बढ़ता ही जाता है। कहीं कटना मतलब केवल इस अर्थ में हम समझ सकते हैं कर्म का कटना, यानी चलो गलती से मेरे से कुछ हो गया है, बुरा कर्म मुझसे हो गया है पहले, उसका मैं फल भोग रहा हूं आज, पर इसे भोगते भोगते आज मैं कोई बुरे कर्म ना करूं और अच्छे कर्म का बल मुझे बढ़ाऊं, तो वो बुरे कर्म का फल भुगतने के लिए मुझे जो बल मिलता है उसे हम कटना कह सकते हैं। पर उसका फल कटेगा, वो तो आएगा ही, उसका सामना भी करना ही पड़ेगा। हम आप क्या जैसे बर्थ से डेथ तक की एक जर्नी होती है, हम बहुत सारे कर्म करते हैं, क्या डेथ से बर्थ तक की भी ऐसी ही कोई जर्नी होती है वेयर वी कैरी आवर मेमोरीज, वी हैव रिग्रेट्स, और जब बर्थ लेते हैं तो कैन वी चूज आवर पेरेंट्स और सर्कमस्टेंसेस कि हम टू अनडू दोस कर्मस? क्वेश्चन इज बर्थ से डेथ की जो जर्नी होती है जिसमें हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, क्या वैसे ही डेथ से बर्थ में भी कोई जर्नी होती है जिसमें हम हमारे पास कुछ चॉइसेस हों जिससे कि हम आगे की अपनी गति को निर्धारित कर सकें। चॉइसेस जहां तक है हमारे पास इस जन्म में है, डेथ के बाद जो जर्नी है उसमें देयर इज नो डायरेक्शन चेंज पॉसिबल टू बी मेड एट दैट टाइम, क्योंकि कर्म करने के लिए हमें शरीर की आवश्यकता होती है और वो शरीर के माध्यम से ही कर्म होते हैं। तो यदि शरीर को हमने छोड़ दिया तो हमारे पास माध्यम ही नहीं है जिसमें हम कोई कर्म कर पाए। सो वी नीड अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन, and when that medium is left behind, so only my subtle body and the consciousness, that is what is moving on to the next body. The choice of the next janma, the next body, next parents, next family is made long ago. So it is not the choice made after death, it is choice made before death itself and before sometimes previous births itself. It is like, for example, we all are aware of the theater industry or the film industry. There is an actor. Now the actor signs a film. So उसको एक फिल्म में वो किरदार निभाने के लिए उसको चुना जाता है. He or she gets into the costumes and plays that role based on the script. Now the script cannot be changed. Costumes more or less is the same. But how he plays the role is his choice. And as he is playing, he is so good. And at that time itself, couple of directors who watch this movie say that I want this guy in my next film. So already, and he also agrees and says, okay, I will work for you in the next film. So he signs for the next film. And as he is signing, there is another director who's saying, okay, after this you have to work for my film. इसके बाद मेरे फिल्म में आना, वो भी साइन कर दिया उसने। तो अभी ऑलरेडी 2 फिल्म लाइंड अप है, ये पहला फिल्म खत्म हुआ नहीं कि दूसरा फिल्म लाइंड अप है, उसके बाद का भी लाइंड अप है। कब किया? पहले कर लिया उसने चॉइस। तो अभी उसने दूसरा फिल्म एंटर कर रहा है, उसका अगला फिल्म रेडी है उसका, और उसके आगे भी वो साइन कर सकता है, उसके ऊपर निर्भर है। वो जब साइन करने बैठता है तब साइन करता है, वो फिल्म खत्म होने के बाद, बेरोजगारी के बाद वो ढूंढने नहीं घूमता। So there is not, there are limitations of examples, but I am just saying that this is how we can understand that we have already signed so many films. So हमारा चुनना हो चुका है पहले, इसके लिए उस ही हम
इसी परिवार में क्यों जन्मे, ऐसा ही शरीर हमारे पास क्यों है, तो वो सब पहले किया हुआ है हमने। मुझे ये रोल करना है, कुछ लोग हीरो का रोल करके थक जाते, बोलते मुझे कैरेक्टर रोल दो, मुझे नेगेटिव रोल दो। दे साइन दोस, दे चूज कि मुझे वर्सेटैलिटी ज्यादा एक्सप्रेस करनी है, मुझे ऐसा कुछ दो। सो देयर इज sometimes there seems to be a progression, sometimes it seems to be a downfall, कि जो भी होता है क्या फर्क पड़ता है, पर उसने चुन लिया ऑलरेडी पहले से। और कुछ कुछ में वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आगे के उसको, कुछ कुछ में इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है, वो इसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि एक डायरेक्टर बोलता है भैया सॉरी, कोई प्रोड्यूसर बोलता है मैं तुमको नहीं अफोर्ड कर सकता, सॉरी, तो अब उसके अगले वाला नेक्स्ट वाले में सीधा चला जाता है। तो ये सब भी हो सकता है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भगवान इन गीता है सेड दैट गहना कर्मणो गति, वो कर्म की गति को समझना कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। इट इज, वी हैव, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, बट द चॉइस पर से हैज हैपेंड व्हाइल वी आर लिविंग एंड नॉट आफ्टर डेथ। सो वी आर फॉलोइंग faithfully that path which already has been laid down by us while we were living a life। वो पहले चुन लिया गया है। तो ये हार्मनी हम कैसे बिठाएं अपने विवेक में, अपने भावों में और अपने एक्शंस में, कि जो हमारा विवेक कह रहा है वही हम ट्रांसलेट कर पाए। We have to keep practicing with smaller things and then translate it to larger things in life. In the sense, we do as per our conviction in small things। छोटे छोटे दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीजों में एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट कि मैंने जो डिसाइड किया है उसको मैं रिस्पेक्ट करूं, कि मैंने ही खुद डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, तो फिर मैं कैसे व्हाई शुड आई नॉट डू इट, आई शुड। सो आई फॉलो अप एवरी कन्विक्शन ऑफ माइन विद एन एक्शन दैट विल स्ट्रेंथन माय power of conviction, and that will help me translate all my convictions into action. Then whatever vivek happens with the help of the study of the scriptures, my life will go in line with that also। So I have to start with smaller steps। डायरेक्टली मैं बोलूं मैं कैसे इसको ट्रांसलेट करूं कि मैं शरीर नहीं हूं, उससे अच्छा मैंने खुद तय किया है कि मुझे 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठूं। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। मैंने खुद तय किया है कि मुझे ये चीज छोड़नी है तो मैं छोड़ूं। माय ओन डिसीजन आई शुड रिस्पेक्ट, वहां से शुरू करना है। देन मे बी लार्जर थिंग्स आई कैन से दैट मुझे गुस्सा नहीं करना है, वो सटलर एस्पेक्ट्स बाद में आएगा, एंड देन अल्टीमेटली हु एम आई, वहां पर जाके रुकेगा। We'll take a couple of these questions then come back। At times negative thoughts crop up as if something bad is about to happen। What causes such thoughts and how to address this? This often happens, something bad is about to happen। Now the point is we don't need to get psyched by it, we don't need to get too much influenced by it कि कुछ बुरा होगा इसलिए मैं कुछ घर से बाहर ही ना निकलूं, मैं निकलूं। कई बार ऐसा होता है कि लोग घबरा जाते हैं, मुझे लगता है कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, और एक्सीडेंट बाथरूम में होता है। अब क्या करें? अब एक्सीडेंट का मतलब ये थोड़ी कि गाड़ी में बैठ के होगा, वो तो बाथरूम में भी हो सकता है। तो घबराहट होती है, उससे अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। बात इतनी है कि हाँ ऐसे कभी इस तरह के थॉट्स आते हैं तो वी हैव टू one technique is we imagine, we ask ourselves what is the worst that can happen, what is the worst outcome। chalo something bad is going to happen, okay what can happen, and just think about it, give yourself answer and say now mentally I have already faced that, इससे बुरा तो नहीं होने वाला है, it is not going to be worse than this, I have imagined the worst and now I am ready। now बुरा क्या होगा, इससे बुरा तो नहीं हो सकता। no fallen state, वो जो गुरुजी very beautifully says that when somebody is in a fallen state, the best part of being in a fallen state is any direction you go you will go up only, because उससे ज्यादा गिर नहीं सकते। मतलब आपने मेंटली उसको अनुभव कर लिया, you already seen it, already experienced it, already imagined it। now उससे बुरा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, I am ready, I am prepared, एक बल मिलता है उससे। and another part is that
whatever has happened so far, if I just go through my life so far, and I see that, even if there were anything that time I defined them as bad, have turned out to be blessings now. If I look at them now, I find that they were not as bad as I used to think at that time. So I have gone through so much, I have faced so much, I am strong enough. This is not going to in any way affect me so adversely. I can manage this. It is possible. And the third thing that I can do is that I every morning tell myself on waking up, and this I heard from Dada Vaswani ji. He used to say that every morning you tell yourself that there is nothing today that God and I together cannot achieve. And at the end of the day, before going to bed, you say, thank you God for giving me a wonderful day and go to sleep. ये एक आदत डालेंगे तो एक अरे भगवान है मेरे साथ खड़े हैं. Why should I? As Puja Guruji says, don't go and tell God how big your problem is. Go and tell your problem how big your God is. प्रॉब्लम से देख के बात करनी चाहिए कि अरे मेरे पीछे इतने बड़े भगवान हैं, तुम क्या चीज हो उसके सामने. तो if I can get that, so through devotion, through right thinking, I will be able to get less influenced by such thoughts and slowly get out of that influence completely also. How do I on a daily basis remove aham mati when I listen to it and after sleeping upon waking up, the dehi and the antakaran start with their demands? This is related to sadhana panchakam, where Shankaracharya ji has given the instruction, dehe aham matihi ujjatam. Give up the identification with the body. So how do I give it up? Because it keeps coming back. The point is I have to strengthen the ahamati in the pure self and simultaneously dilute the ahamati in the body. So I have to do this simultaneously and it will come back. It is not a one-time job that, okay, I have heard and I tell myself that, okay, I am not this body. Now the ahamati has gone from the body. It will not be like that. If it stays on for the rest of the day, it is a big achievement. कि रात को सोने के बाद next morning only it comes back, then it is a big achievement already. But we have to be patient. We have to keep on reminding ourselves, and practice of meditation does help in getting this out. Slowly we have to keep diluting this I am the body aspect, and whatever we are doing just for the upkeep of the body and all, for the maintenance, of course, that much we need to do, but that also we can do with the awareness that I am doing it to maintain my body and not me. I don't need maintenance, my body. So this clarity, I have to remind myself, I have to keep on reminding myself, it is not a one-time job, it is not a 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, it is a lifetime project, and I have to keep on doing it. So dehe ahammatihi ujjatam comes along with brahmasmiti vibhavyatam. So both these instructions go together. So they have to happen simultaneously. If someone dies and they leave behind their mandir and puja stuff, which no one else in the family will value, what should one do? If there is any such stuff, now what do we do with the clothes and other belongings of that person? What do we do? We give it to somebody who may be able to use it. So generally in our this thing, we give it, if it is in a good condition, we give it away. And if it is not in a good condition, then we find some use for it somehow, or just let it go.
So if puja materials and all are there, we can find if somebody can use it. There is a habit that we have of dumping things in temples and ashrams. Please do not do that, especially without, not without asking them, because people come and put some murti something कि ये हमारे दादाजी का है, अभी वो नहीं रहे तो हम आपको दे के जाते हैं. But it is not charity, it is littering. So क्योंकि उनको नहीं चाहिए. अब अच्छा खासा मंदिर बना हुआ है, अब आपकी घर की मूर्तियां क्यों वो इकट्ठी करेंगे? तो that is not the right thing to do. One is, if there is somebody who would like to do the puja of those idols, or the puja materials can be used by someone, we can always ask them. If they agree to accept, we give it to them respectfully. If not, these items usually are just वो नदी में हम उसका विसर्जन कर देते हैं. This is one thing that usually is done, that नदी में हम प्रार्थना करके उनको विसर्जित कर देते हैं. The puja material and all, which is not a consumable, it's articles like चम्मच होता है, ग्लास होता है, प्लेट होता है, ये सब चीजें तो यूज में ली भी जा सकती हैं. But I'm talking about the murtis, etc. If the idols, etc. are there, and if nobody is there to offer any worship, respectfully we just pray, and with that prayer we offer them in some river. तो फिर उसका अपना वो disintegration हो जाता है. Sages who go into deep meditation for hours or days are trying to imbibe I am Brahman in their bhava, or awaiting for a darshan of the Lord, which is what we have read in Puranas. Okay. There's no question here. It's a statement. If this is, I do not understand the question here, but I think what are they trying to do being in meditation for hours together? Maybe that is the question, I am assuming. So I think hours or days together, whatever sages go into meditation, they are, there is Saguna Dhyan, there is Nirguna Dhyan, all these things we'll be dealing with in the forthcoming 10 days or so. But the Saguna Dhyan, Nirguna Dhyan ke anusar, those who do Saguna Dhyan, they actually are, preparing themselves to get the, darshan of the Lord in a particular form. And there are many instances in various scriptures that we find they have succeeded in such a thing also. And from the Nirguna aspect, the Advaita rishis who practice meditation, for such people also, it is the knowledge of my true self. I who consider myself today as something that I'm not, I get established in what I really am. So that is what is the attempt from the Nirguna Dhyan sadhaks also. There are some questions and some question papers. श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाए? For any seeker, Shraddha is the most valuable wealth. कहते हैं समाधि षट संपत्ति कहते हैं, क्षमा दमो परमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान. Of these sixfold spiritual wealth, Shraddha is considered to be the most valuable. तो श्रद्धा गई तो सब गया. कैसे उसको बढ़ाया जाए? One thing that there is no formula. बाकी सब में तो हम कहते हैं चलो विवेक बढ़ाना है तो आप शास्त्र का पठन करो, चिंतन करो, ये सब तो उसमें टेक्निक्स भी दी जाती हैं. बट श्रद्धा के लिए there is no magical formula. So what can be done? One is, as in Sadhana Panchakam, Shankaracharya ji says,
संगस सत्सु विधीयताम भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम शांत्यादि परिचयताम. There is a sequence. So Shanti Adi means the Shamadamadi Sampatti, which includes Shraddha. You increase your Shraddha. Through what? The previous step is Bhagavato Bhaktir Dridhadhiyata. Shraddha increases when we devotedly practice certain sadhanas. We learn to love Bhagavan. How do we love anything or anybody? By spending time. साथ में समय बिताने से प्यार बढ़ता है. When we spend time with each other, then slowly love, acceptance also keeps coming. So, spend time in the worship of the Lord, spend time in the thoughts of the Lord, remembrance of the Lord. So, that way bhakti increases, and through that also Shraddha increases. This is one. But how to increase bhakti? So, previous step, Sangha Satsu Vidhyata, Satsang. So, Satsang will help us increase both bhakti and shraddha. This is one. Second thing is, and the second part also is actually facilitated by satsang, that we are reminded that आप आस-पास में दुनिया में देखो, just keep your eyes and ears open. आप देखो तो आपको श्रद्धा बढ़ाने के बहुत सारे avenues मिलेंगे. When we see that so many things are happening which nobody can take credit for, which we feel that something worse could have happened, that did not happen. So many things are happening which nobody has, visibly enabled, but it's still happening. So क्या है ये श्रद्धा? And it is not just for something positive. श्रद्धा में positive मेन क्या है श्रद्धा में? कि मैं ऐसी चीज में बिलीव करता हूं जो मुझे आज दिख नहीं रही. That is what is श्रद्धा. How many of us have actually seen coronavirus? How many of us have seen? We have not seen, but we have seen its effects, and we have Shraddha that it exists, and it is very potent, and I have to keep away. आया में श्रद्धा है कि नहीं? नहीं देख रहे हैं. हमने कभी भी उसको देखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर? नहीं देखा है. नहीं, फोटो छपे हैं, फोटो छपे हैं, पर वो किसी पे विश्वास किया ना, श्रद्धा है ना. तो I am just seeing its effect, and when I am seeing the effect, I have Shraddha in the cause. Now, artificial intelligence, I'm saying, oh, what a great artificial intelligence. पर श्रद्धा की बात यह है कि चलो आर्टिफिशियल, मैंने चैट जीपीटी पे डाल दिया कि मुझे मेरा ये असाइनमेंट करके दे दो फटाफट, मेरा ये रिपोर्ट जनरेट करके दे दो, वो करके दे देता है. मुझे इतनी श्रद्धा है कि वो अच्छा ही काम करेगा, इतनी श्रद्धा है. बट द पॉइंट इज, पूज्य गुरुजी सेज वेरी ब्यूटीफुली, बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस. बनाया किसने? चैट जीपीटी. बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस. And behind human intelligence is divine intelligence. Have faith in that. Because उसका इफेक्ट दिख रहा है, उसका इफेक्ट का इफेक्ट दिख रहा है. पहले बोलते थे कि बुद्धि अपनी चल रही है, इसका मतलब पीछे है कुछ जिसकी वजह से चल रही है. अभी बोल रहे बुद्धि की वजह से जो चल रही है उसमें श्रद्धा है, तो उसके पीछे जो डिवाइन इंटेलिजेंस है उसमें श्रद्धा हो सकती है. तो जस्ट टू बी ऑब्जर्वेंट विल हेल्प अस इंक्रीज श्रद्धा. So this is another way, but this also can be, we will be able to do that with the help of satsang. Satsang can help in this also. Okay. In Ramcharitmanas, it is said to take the Lord's name all the time for being released from samsara. Yet, I tell myself that I am not the BMI. I will not be able to focus on the Lord's name. See, one is bhakti marg and one is jnana marg. A bhakta is not working so much on I am not the body, mind, intellect. The bhakta is more working on the what do you call it? The glimpse of the Lord, or the contact or the connect with the Lord who is endowed with great qualities like compassion and unconditional love
And so that kind of connect is what a devotee is looking for. So chanting the Lord's name is the primary sadhana there. Whereas in the Jnana Marga, I say, I am not this, I am not this, I am not this, I am that pure self which is beyond my body, mind and intellect. So that is a different type of sadhana. So two different margas are there. In both, the attempt is to reach that supreme consciousness only. But in one, I go towards the supreme consciousness through devotion, where there is two in the beginning, ultimately there is only one. Whereas in the path of knowledge, I start off itself with shedding my non-essentials and going just with one. So that is why sometimes some people feel devotion is easier, some people feel path of knowledge is easier. But there is nothing easy or difficult, both are difficult only. We have to put in effort, दोनों में मेहनत लगती है, तो करना ही पड़ता है. Much clarity on the parts, cleanup, maintenance and decorations of Sthula Sharir. How to do the same for Sukshma Sharir. Sukshma Sharir ka parts and all, so there are lots of granthas. Parts, if we have to say, with the Pancha Pranas, the vital airs, which take care of all the physiological functions. That is a part of the Sukshma Sharir. Second is the senses, the Jnanendriyas, the organs of action, the Karmendriyas, speech, hands, legs, etc. And the mind, intellect, the different vrittis, different thought modification. So these whole thing is the Sukshma Sharir or the subtle body. Cleanup, maintenance and decoration. The best decoration of the mind is the Lord's name or the scriptural statements. Our scriptures very beautifully say what should our mind be comprised of. It says Tasya Yajureva Shiraha Rit Dakshinah Pakshah Samottarah Pakshah Atharvangirasah Ucham Pratishtha. That the mind, how is it composed of, comprised of? It is filled with, a healthy mind is filled with all the great spiritual, scriptural declarations. Means it is filled with thoughts of knowledge, thoughts of devotion, thoughts of understanding. ये सब से जब मन भरा होता है, तो that's the greatest decoration. And as far as cleanliness is concerned, satsang, japa, any selfless service, all these things will help me clean up. Something where when I include more than I, me, myself in my actions, the purpose of my action or the altar of dedication for my actions is something greater, something nobler, something larger, then all these things will help me clean up. Because physics ka direct principle, when volume decreases, pressure increases. When the volume increases, pressure drops. So same way, when I include more and more into me, means whatever I am doing, now I am doing only for myself. Then slowly include family, I am doing only for family. Then slowly include community, I am doing only for community. Then slowly include. So that way, जैसे मैं expand होता रहता हूँ, मेरा volume बढ़ता है, pressure घटता है. यानी all the unwanted elements of the mind, all that keep slowly dissolving. So एक्टिविटीज को अगर हम ज्यादा बढ़ाते हैं तो एक्टिविटीज को बढ़ाने की बात नहीं है, एक्टिविटीज जिसके लिए कर रहे हैं उस क्षेत्र को बढ़ाने की बात है. एक्टिविटीज तो जो कर रहे हैं उतना ही कर सकते हैं. जैसे जैसे हम अपना दायरा बढ़ाते जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं. तो जो हम कंसंट्रेट कर रहे हैं यही उस पे, तो वो थोड़ा हिल जाता है क्योंकि इधर से कुछ आ रहा है, इधर से कुछ सुन रहे हैं, उधर से सुन रहे हैं, तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है. तो जो हमारा पर्पस है कि गुरु आया है मगर मुझे उसी पे कंसंट्रेट करना, तो वो थोड़ा शेक हो जाता है. यहाँ प्रश्न ये है कि मेरे स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की भी शुद्धि मैं कैसे करूं. तो शुद्धि करने का ये जरिया है, क्योंकि आपके पास जब आप अगर अपने बेडरूम में बैठ के स्विमिंग सीखना चाहो तो नहीं सीख पाएंगे.
तो स्विमिंग तो स्विमिंग पूल में ही सीखा जाता है और उसमें थोड़ा पानी तो निकलना ही पड़ता है, थोड़ा डूबना ही पड़ता है, थोड़े हमारे अंदर नाक से कान से पानी जाएगा अंदर, वो जाएगा ही। ऐसे ही जब हम अपना दायरा बढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर खिटपिट होगी, वो खिटपिट का सामना करते करते ही हमारी शुद्धि होगी, हमारे अहंकार का तभी नाश होगा जब हम, गुरुदेव यूज्ड टू से दैट गेट किक्ड बाय द वर्ल्ड, दैट इज द ओनली वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर ईगो। तो लात खानी ही पड़ेगी तब जाके हमारा अहंकार ठिकाने लगेगा। तो वो तो तरीका है ही, अब खिटपिट तो करनी पड़ेगी। बच के जाने का प्रयास करेंगे, हाँ बच सकते हैं टेम्परेली कुछ समय के लिए, बट उसके बाद वापस उसी दुनिया में रहना है। एंड यही याद रखना चाहिए कि हम दुनिया के लोगों पर और चीजों पर हम अभी निर्भर हैं। चाहे हम कहें हाँ मैं ब्रह्म हूँ, तो खाना पीना तो खाना पड़ता है ना, तो किसान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जो किसान से लेके हमारे दुकान तक लाता है उस पर निर्भर रहना पड़ता है, दुकान से घर तक लाता है, रसोई कर, सब पे निर्भर तो रहना ही पड़ता है। वी कैन नॉट, तो उनके साथ वैसे खिटपिट हो, उससे अच्छा हमारी सेवा के क्षेत्र में खिटपिट हो, अच्छा है ना। हम ये कम से कम इतना तो कर रहे हैं कि चलो ये भी सामना उसका करना। कोई आयोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मतभेद सब इधर उधर होता है, तो वो सब से हम सामना उसका जब करते हैं तब हम झुकना भी सीखते हैं कभी कभी, और ऐसे अनुभव भी आवश्यक होते हैं, हमारी मदद करते हैं ये सब। पर वो एक दृष्टि हमारी उस पर ऐसी पक्की होनी चाहिए कि मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर द लॉर्ड, then I won't get angry. But because if I'm getting angry, then Bhagwan is not going to be happy with my offering. So I have to have that. How to get rid of Karan Sharir? Karan Sharir is avidya. Simple terms. Karan Sharir matlab agyan. So getting rid of agyan is only possible by gyan. That is the only way. So we have to get ज्ञान, and ज्ञान is not from the बौद्धिक level, क्योंकि बुद्धि के पीछे है कारण शरीर। तो बुद्धि से समझना is one step, but to be able to live that knowledge, slowly translate it through manan, through nididhyasan, is the process where I can get rid of the ajnana also. In Shakta Parampara, Mother Shakti is worshipped in order to achieve liberation. So is it like Mother Shakti herself helps us to surpass herself, Maya, and get liberated? Shakta Parampara में, किसी भी परंपरा, whatever parampara we are talking about, in every parampara, no, any scripture we read, any temple we go to, that particular manifestation of the reality or that deity is what is glorified, or that which is worshipped as the ultimate reality. तो शाक्त परंपरा में, ऑल्दो हम वेदांत में कहते हैं कि माया इज शक्ति, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अनाद्य विद्या, तो ये देवी को हम माया शक्ति के रूप में जानते हैं, वो ठीक है, पर शाक्त परंपरा में दैट शक्ति हरसेल्फ इज ब्रह्मन। तो इन द शाक्त परंपरा व्हेन वी आर thinking of Devi, she is Brahman, she is that Satchidananda Brahman, she is that supreme reality, और माया उनकी शक्ति है। It is a power, it is the what can happen which seems impossible also that can happen, that is Maya Shakti. So in Shakta Parampara, Shakti, Devi, Mother, Goddess is that supreme Brahman. The same way for in a Shaiva Siddhanta, Shiva is that supreme Brahman. So that we have to understand that Devi herself is that manifestation of that Brahman only, where तो वो अपने आप को सरपास करने में नहीं, but she herself is the embodiment of that supreme Brahman. When we take Shubha Sankalpas and we face obstacles, do we look at it as a sign from the divine and pause, or should we exercise more will to make that Sankalpa happen? It is said that संकल्प लेना मतलब हमारे मन में संकल्प का जागना,
the arising of a sankalpa, Shubha Sankalpa in our mind and the fulfillment of the Shubha Sankalpa, both are grace of God. Then what is my job? My job is to strengthen the sankalpa, work towards it. Fulfillment करूं कि नहीं करूं वो छोड़ देना चाहिए, but we should keep on going towards it. शुभ है तो करना ही चाहिए, बट हो सकता है कभी शुभ की परिभाषा मैंने ठीक से नहीं समझी हो. I feel that this is Shubha, but maybe that doesn't turn out to be Shubha. So I have to keep my eyes and ears open, be receptive of indications, but obstacles is not an indication to give up. Obstacles is an indication to try and put in more effort so that we achieve whatever. If it is Shubha, अगर अशुभ है तो it is an opportunity to give it up. तो कभी अशुभ चीज आती है, इसीलिए वो वक्रतुंड महाकायम कहते हैं, तो निर्विघ्नं कुरु मे देव. वैसे तो द पॉपुलर थिंग इज सर्व कार्येषु सर्वदा, बट पूज्य गुरुजी से वी शुड से शुभ कार्येषु सर्वदा, कि शुभ कार्य में निर्विघ्न हो जाना चाहिए और अशुभ कार्य में तो विघ्न आना चाहिए ताकि हम उसको टालें, हम उससे छूटें. सो वी शुड हैव नो, if there is an obstacle for doing something wrong, it is a good thing, it's a blessing. And for something right, if we find some obstacle, some difficulty, it should give us greater enthusiasm to pursue it and somehow achieve it, because it is something good, it is something for the well-being of everyone, including me. Difference between Anand Swarup Atma and Anandamaya Kosh. Very simple. In two statements, okay, when I say I am happy, that is Anandamaya Kosh. When I say I am happiness, it is Anand Swarup Atma. ध्यान के समय शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं क्यों उभरती है, इन्हें कैसे हील करें? When we have, जब हमारे अब जब हम व्यवहार में रहते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्शंस होती हैं, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि वी कीप कई चीजें हम दबा के रख लेते हैं, उसको साइड कर देते हैं, पुश इट अंडर द कारपेट, क्योंकि अभी आई हैव समथिंग टू डील विथ, सामने कुछ बाहर है. जब हम ध्यान अभ्यास वगैरह करने बैठते हैं तो कोई ऐसा बाहर से मुझे कुछ दबाने के लिए कोई चीज नहीं है, मैं कोई इनहिबिट नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को रोक नहीं रहा हूँ, मुझे कहीं किसी के सामने कुछ दिखना नहीं है, किसी प्रकार से कोई चीज दबती नहीं है, तो फिर जो भी दबी हुई चीजें हैं वो सब निकलती हैं. तो उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें निकल सकती हैं. समटाइम्स देयर आर थॉट्स which I have never thought about. ऐसा लगता है हमें कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था इस टाइम, वो भी ऐसे टाइम पे आ रहे हैं. Sometimes there are very unhealthy, vulgar thoughts also that come. क्योंकि ये कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था. हो सकता है. But the point is, जब हम when we are on the path of good health, sometimes उल्टी आती है. वो उल्टी आती है, वो उसमें चेक करने थोड़ी जाते हैं कि उसमें क्या क्या निकला है. वो आया, उसको जाने देते हैं, वो हो गया, खत्म, ओवर, फ्लश इट. तो उसी प्रकार some things come out, we don't need to be, we don't need to analyze it at all. वो आ रहा है, it is like we are throwing up, vomit है, गया, just let it go, don't think about it. शारीरिक पीड़ाएं भी हो सकती हैं, but sometimes it is, we have to be very very honest with ourselves to find out whether it is actually the play of the mind or it is actually a physical problem. If it is a physical, because sometimes we actually have some issue with the body and then we say no this is just ऐसे ही हो रहा है करके ज्यादा शरीर को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है. Sometimes let's be practical. Sometimes if we are not able to sit on the floor for long, okay, let us sit on the chair. Idea is our mind should be off the body. दर्द जितना होता है, माइंड गोज टू द बॉडी. तो इसीलिए वी हैव टू, तो वी शुड बी प्रैक्टिकल. पूज्य गुरुदेव वाज मोस्ट प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच. ही नेवर सेड दैट ऐसा ही करना है. आप ऐसा करो जिससे कि आप
शरीर से, मन से अपना ध्यान को हटा सको एंड गेट एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ. सो इसीलिए इफ इट कम्स, if it is just a play of the mind, just let it be like ignoring a child. When a child is there, उसको इग्नोर करते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप चुप हो जाता है या हो जाती है. कभी कभी उसको सिर्फ चुपचाप देखते रहो, नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन. वो बच्चा जब मस्ती कर रहा होता है उसको बस चुपचाप आप देखते रहो. वो थोड़े समय के बाद वो देखता है कि वो देख तो रहे हैं पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है, कोई विस्फोट होने वाला है. वो चुपचाप सब चीजें रख के एकदम सीधा हो जाता है. अपना मन भी ऐसा ही. समटाइम्स वी हैव टू जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्व. कर ले जो भी करना है, देख रहा हूं. कुछ समय के बाद मन सीधा हो जाता है. कभी कभी उसको पूरी तरह से इग्नोर, जस्ट डोंट इवन लुक एट इट. देन इट फील्स कि अरे मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है, तो छोड़ो, ये सब नहीं करना है. कुछ अच्छा किया, उसको शाबाशी दो, अरे वेरी गुड, यू आर बिहेविंग योरसेल्फ, तो उसको लगता है आई विल गेट अटेंशन व्हेन आई बिहेव माय सेल्फ. इट्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. तो इसी प्रकार समटाइम्स उसको समझा के हम कर सकते हैं, अरे भैया, व्हेन इट इज अ प्ले ऑफ द माइंड. बट व्हेन इट इज जस्ट समथिंग जस्ट कमिंग आउट, उभर रहा है कुछ, तो आने दो, लेट इट गो एंड जस्ट बी एन ऑब्जर्वर टू इट. समटाइम्स दुख भी होता है, कभी कभी ध्यान में बैठे और दुख होता है. Happens. Suddenly you're feeling so sad. Why am I feeling so much of sorrow? I don't know. But it is there. How? I'm just observing. ठीक है. I am not this. I have to reinforce. मैं ये नहीं हूँ, तो देख रहा हूँ, ठीक है. जैसे सुख के विचार आते हैं, ऐसे दुख के विचार आते हैं, दोनों विचार ही तो हैं, और विचार मुझे छू नहीं सकते. So I have to strengthen that. इसीलिए meditation is not the starting point. अभी आजकल दुनिया में ऐसा हो गया कि वी स्टार्ट विथ मेडिटेशन. अरे पर थोड़ा उपनिषद पढ़ लो, हाँ वो बाद में, पहले मेडिटेशन सिखाओ, बाद में उपनिषद. अरे उपनिषद के ज्ञान के बिना आप मेडिटेट किस पे करोगे? आपको पता ही नहीं क्या है. हाँ, थोड़ी देर बैठ के आप थोड़ा सा प्राणायाम करके मन को शांत करके बैठना हो, वो बैठ सकते हो, बट दैट इज नॉट मेडिटेशन. आई एम लेटिंग आउट द सिलेबस. Also, Shakta Marga is considered to be fast. Can Shakti Puja with the knowledge of Vedanta be an option for a sadhaka? I don't know why, but I am attracted towards both. अच्छा, ठीक है. If you are attracted, you can. There is nothing, no harm. Mother Goddess is not against Vedanta, and not against diversification also. But the point is that हम वेदांत का ज्ञान भी लेके और शक्ति उपासना कर सकते हैं. देयर इज नो हार्म इन दैट. बट फास्ट स्लो की चिंता नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट कीप थिंकिंग अबाउट दिस विल बी फास्ट, दिस विल गिव मी क्विक रिजल्ट्स एंड ऑल. आई शुड नॉट थिंक अबाउट दैट. आई शुड डू माय साधना विथ माय फुल हार्ट इनटू इट, एंड देन व्हाटएवर हैज टू हैपन, इट विल हैपन इन ड्यू कोर्स. So there is nowhere in the scriptures it is said that this is this will happen in so many months, so many weeks, so many years. ऐसा कोई कहीं पर भी नहीं. इतना ही कहते हैं कि soon enough you will progress and reach. So what that means will depend on how much we completely apply ourselves. Okay, so there are a couple of more questions. Can we take 5-7 minutes? अब ऐसे पूछोगे, मना थोड़ी करेंगे, अब कर ही नहीं सकते मना. ठीक है, हम तो अब फंसे हुए हैं. We are captive audience. We have to. How many total number and types of vivek? There are innumerable. Some of them have been enlisted. We had talked about in the sadhana panchakam classes. That can be, उसमें देख सकते हैं. We have lot of different, and there is no specific number. Has been. विषाद क्या है? Why does it recur? When there is attachment towards anything, and I am not able to get what I am attached to, either it takes the form of anger
और इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिजेक्शन। जब मुझ में जोश होता है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं हुई है, और रजोगुण ज्यादा होता है, तो माय रिएक्शन इज एंगर, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग, यू नो आई शुड हैव गॉट इट, दैट इज द थिंग। एंड व्हेन आई हैव मोर तमस, तमोगुण ज्यादा होता है, मेरा कॉन्फिडेंस वगैरह लेवल कम है, तो देन आई फील डिजेक्टेड, I don't think I am going to get this, it is not possible, but both are springing out from attachment। राग से ही ये क्रोध भी होता है और विषाद भी होता है। तो so when attachment is worked upon, when I am getting rid of my attachments, slowly I will be out of both krodha and vishad। What is the difference between actions by karma yoga offered to God Prasad Buddhi when done for results different from actions done as निष्काम actions? जैसे निष्काम मतलब विदाउट काम, कामना के बिना, उसको ही निष्काम कहते हैं। एंड when any result is expected and I am doing any actions for gaining something specific, it could be anything for myself or others, वो सकाम है। अपने लिए हो या दूसरों के लिए भी हो, मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब वो सकाम है। आई वॉन्ट दिस, सो फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम प्रेइंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर सब लोगों का दुख दूर हो जाए, सकाम है। इवन इफ इट इज सब लोग, हाँ इट इज बेटर देन मेरा दुख दूर हो जाए, लोग को जाओ जो होना होने दो, वो दैट इज स्वार्थी। बट स्वार्थ एंड सकाम में फर्क है। स्वार्थ इज आई एम ओनली concentrated on myself. Here sakama means even for others if I'm asking, but I'm asking for something, I'm expecting a reward or result of an action, that is called sakama. Nishkama means I am not expecting anything, it is just the action itself is fulfillment for me. I am worshipping for the sake of worship, I am not expecting something after that, I am just doing it because I am doing it. I am doing it because I cannot but do. मैं वो किए बिना नहीं रह सकता, मुझे करना ही है, वो निष्काम कर्म है। वो चाहे अब हम ईश्वर अर्पण बुद्धि कहते हैं, तो ईश्वर अर्पण बुद्धि यानी मैंने वो कर्म ईश्वर को अर्पण कर दिया है। एंड प्रसाद बुद्धि कहते हैं तो जो भी मिलेगा आई विल एक्सेप्ट इट। बट इफ आई से दैट नो आई वांट दिस एंड देयरफॉर आई एम ऑफरिंग दिस टू यू, देन इट इज नॉट निष्काम, इट इज सकाम कर्म। Nishkama is I am offering it to you, over, job done. It is like, you know, when I give a gift and when I invest, when I lend and when I gift, there's a difference. Lending is give it back to me later, gifting is I have given। but वो गिफ्टिंग में भी कभी कभी मैं उसके बर्थडे पे ये दे रहा हूँ तो मेरे बर्थडे पे वो ये देना चाहिए मुझे, तो वो सकाम हो गया, वो तो एक्सचेंज हो गया, बार्टर हो गया, दैट इज सकाम। बट व्हेन आई एम जस्ट, हो गया मेरा काम। उसके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे एक हम कहीं रोड पे चल रहे हैं और साइड में एक बच्चा गिर गया हमारे सामने, वो साइकिल करके आ रहा है, गिर गया। As a reflex, I immediately pick him up and dust him and say कुछ ठीक तो है ना, ठीक है ना, ओके। वो गया, मैं गया। बाद में वो 2 दिन बाद मुझे मिला वही लड़का और बोला अंकल आंटी आप मिले थे, थैंक यू मुझे आपने, एंड वी डोंट इवन रिमेम्बर हिज फेस। तो कौन हो तुम, मैंने क्या मदद की, क्या किया मैंने, मुझे तो याद भी नहीं है। So nothing, no calculation, it was just a reflex. उसमें कोई कामना थी ही नहीं कहीं पर, not even a thought that I should do this, so let me do this, ये भी नहीं था। That is निष्ठा। Wherever I calculate, wherever I expect, wherever I want something back, all that is sakam। So we will close here। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।